मंडी को आए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन क्या अदिति और ताहा अभी भी आपको लोग बिब्बो जान और ताजदार के नाम से ही ज्यादा पुकारने लग गए हैं? मेरे पापा मुझे ताजदार बुलाते हैं। Really? जी। मेरा सेट पे भी नाम था बिब्बो जान और इनफैक्ट इट हैड बीन अब्रीविएटेड टू बिब्स। क्या बात है। लेकिन इनफैक्ट मैंने देखा है ताजदार या ताहा, आपने तो अपने इंस्टाग्राम के मिडिल नेम को भी ताजदार बना दिया है। अभी तो मैं ताज के नाम से जाना जाता हूँ। ताज के नाम से जाना जाता है। जी हाँ। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन you know how was it really to be on a Hira Mandi stage with all the women for you especially Taha? A blessing, an honor. Yes. All the beautiful women, all the most talented women that you could find in the industry. Hardworking as well, patient women as well. More so, I'm a big believer क्योंकि my mom's a single mom और मेरी मम्मी ने बहुत सारे sacrifices किए हैं मुझे बड़ा करने के लिए। जी। आज जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, it's all thanks to my mom. जी। So being on a set with not only talented women who are performing in front of the camera, but if you remember, there were so many women behind the camera who were just aiding. Actually, our whole AD group was completely women. Like 99% were women. Wow. All right, and that's brilliant, and we are so lucky to have that female, feminine energy. Just bless. बिल्कुल। अदिति, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये आपकी दूसरी फिल्म थी संजय लीला भंसाली के साथ, तो आप और भी ज्यादा एक्साइटेड होंगी क्योंकि मेहरुनिसा से भी आपको इतना ज्यादा अप्रिसिएशन ऑलरेडी मिल चुका था। तो एक बार और एक ऐसा किरदार निभाना जिससे कि आप लोगों के दिलों में उतर जाए, जो कि आपने किया बिब्बो जान के किरदार से, कैसा लगा आपको हीरा मंडी करके? बहुत बहुत स्पेशल। आप जब छोटे होते हैं आप सपना देखते हैं, और जब वो सपना साकार होता है इट फील्स रियली रियली अमेजिंग। एंड एक बार नहीं, 2 बार। एंड आई ऑल्सो फील कि जब हम फिल्म करते हैं तो हम 30-50 डेज डायरेक्टर के साथ एक यूनिट के साथ बिताते हैं, समटाइम्स मोर ऑफ कोर्स, बट आई एम सेइंग एवरेज। बट जब हम शो करते हैं तो इट्स about 80 days minimum, because utna content hota hai, it's like 8 episodes, and I always feel like I felt so lucky to be in such close proximity to learn from a master and a legendary director, but also an incredible human being, Sanjay sir jaise, or every day to be with him, to be around him, unse seekhna, उनकी टीम से सीखना, it was really really amazing, very like life affirming and incredible, and you keep wanting opportunities like that. It's almost, Aditi, I wanted to ask you this. One question came to me right in the morning. I really thought that I should ask you. Do you think this character of Bibbo Jaan, what it has done to you is something what Anarkali was to the legendary Madhubala? अब मैं अपने मुंह से कैसे बोलूं? Do you think it will stay with you for like that long? People will remember you for Bibbo Jaan. Is it that kind of a character? The thing is that I love what I do. I've worked very, very, very hard. It's not been easy. I know I've worked with some very, very legendary filmmakers, but it's been a step at a time. और मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जिन भी फिल्ममेकर्स के साथ मैंने काम किया है, they have found me and brought me on to be a part of their vision. So I'm very grateful that they found me. But मैं ये कहूँगी कि मेरा जो काम है, that is to be on set and to surrender to the director. Yeah. What happens to the roles, what happens to me, और जो भी प्यार मिलता है, वो आपसे मिलता है. So the love and the iconic nature of these characters or the actors or the stardom that we get is because of you all and because of our directors. So I can't take any credit for that. I'll just say that I work very hard, but also somebody's hand is on my head. The universe's hand is on my head.
And thank you for making Bibbo Jaan so iconic, and thank you Sanjay sir for making her a part of my life. So क्या बात है। that's all I can say. जबरदस्त। ताहा, आपके लिए पहली बार था इतने आइकॉनिक डायरेक्टर के साथ काम करना। क्या आप बहुत नर्वस थे उनके साथ काम करने से पहले? आपको ये लग रहा था कि ऑलरेडी हमने काफी कहानियां सुनी है दैट ही इज अ परफेक्शनिस्ट, तो उस तरीके से क्या आप डिलीवर कर पाएंगे या नहीं? उन्होंने जब आपको चीजें बताई इस किरदार के बारे में, आपने किस तरीके से सोचा कि आप उनको कैसे डिलीवर करेंगे? मुझे ये रोल काफी अचानक से मिला। अचानक मिला आपको? क्योंकि सच बोलूं तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कुछ लगभग 10-15 महीने कास्टिंग डायरेक्टर के पीछे मैं भागता गया, मिन्नतें मांगता गया कि मुझे ऑडिशन दे दो। तो जब फाइनली मिला जी, तो मुझे 3 दिन का रोल मिला था और मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि संजय सर के साथ काम करते हुए कोई भी रोल छोटा बड़ा नहीं होता। ऑफ कोर्स ये बहुत ही छोटा था, जस्ट सेइंग। लेकिन इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा था। No, it wasn't Tajda, it was a different role altogether. अच्छा, okay. It was a different role. I got a 3-day role. जी। वहां से फिर संजय सर ने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुझे ये रोल नहीं, तुझे बलराज का रोल करना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे बलराज का रोल दिया। उसका लुक टेस्ट हुआ, उसके सारे मतलब रीडिंग्स हुए, जो भी हुए, और वो सब खत्म होने के बाद जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था, आई गॉट ए कॉल, और लाइक यूजुअल उन्होंने कहा कि सॉरी सर, पर सर हैज चेंज्ड हिज माइंड। मैं बोला सो क्लोज, सो क्लोज, आई वाज गोइंग टू गेट समथिंग गुड, बट नो। फिर सर ने मुझे वापस बुलाया। उन्होंने कहा कि I begged him, I told him कि सर मुझे प्लीज़ निकालो मत, मेरे पास कुछ है नहीं, तो आप मुझे बताइए अगर मैं कुछ अलग कर सकता हूँ तो मैं कुछ अलग कर दूँ। एंड देन ही सेड कि बैठ। एंड आई सैट डाउन एंड उन्होंने कहा कि तेरी आंखों में कुछ है, आई वॉन्ट यू फॉर द लीड रोल ऑफ माई प्रोजेक्ट। क्या बात। और उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे। आई थॉट ही वॉज जोकिंग, but finally when I stepped out of the door, I realized that this was not a dream, that dreams in this world can come true when you don't think of it, or when you completely surrender to the universe. Somehow it just comes back to you. And I don't understand that concept, because I've always believed that hard work will always get you where you want. और यहाँ पर तो मैंने कुछ किया ही नहीं। You know, but it's all the hard work I guess over the years. So जी, आपने कई साल तक बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने इससे पहले भी किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं कुछ किया। ये डेफिनेटली एक ऐसा शायद मोड़ था जिसमें सबके दिलों पर आप उतर गए। Well, that's again, like she said, it's all thanks to you guys. So a big round of applause for the amazing audience that we have who supports us. Thank you so much. जी, इनक्रेडिबल रोल रहा। अदिति, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत डिफिकल्ट होती है आपके लिए संजय लीला भंसाली की जो एक्सपेक्टेशन है उनको मीट करने के लिए? व्हाट इज द चैलेंजिंग पार्ट दैट यू फील इज ऑफ वर्किंग विद हिम? Honestly, when you're in front of an incredible director and a visionary, सबको चैलेंजिंग होता है। अच्छा। लेकिन होना चाहिए, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप कभी कंटेंट नहीं हो सकते हैं। You have to keep striving for perfection, and you have to keep pushing yourself. And आप सोचिए कि आप एक किरदार निभा रहे हैं जो आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे आपको कन्विंस करना है कि ये सच्चा है, कि ये मुझ पे सच्ची तरह बैठ गया है कि आई एम दैट पर्सन। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो एक सरेंडर होता है ना, दैट इज द थिंग, कि आप बिल्कुल सरेंडर कर दें आपके ईगो को, आप कौन हैं, मतलब आप कहाँ से आए, क्या है, नथिंग मैटर्स। ऑल दैट मैटर्स कि व्हाट इज द विजन ऑफ योर डायरेक्टर, व्हाट इज द, मतलब कि ये जो किरदार का सच्चा दिल है वो क्या है, और क्या वो आप पे बैठा है, और आप क्या उन पे एक दूसरे से जो एनर्जी फ्लो होती है ना, वो होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, the challenge is what is a fuel for me. I'm sure most of us, आप सबके लिए,
अगर आप मतलब जब तक आपको चैलेंज ना मिले तो क्या फायदा आपको यू हैव टू कीप स्ट्राइविंग और जो आर्ट होता है वो हमसे बहुत बड़ा होता है तो आप इट्स ऑलमोस्ट सेक्रेड जैसे गॉडली जो आर्ट एक इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि यू कीप स्ट्राइविंग टू रीच दैट परफेक्शन एंड आई फील लाइक डायरेक्टर्स लाइक संजय लीला बंसाली दे रियली पुश यू क्योंकि वो सब बोलते हैं कि संजय सब परफेक्शनिस्ट हैं लेकिन पीपल डोंट नो कि वो अपने ही इज हार्डेस्ट ऑन हिमसेल्फ ही इज पुशिंग हिमसेल्फ द मोस्ट और आप उनको देख के इतना इंस्पायर होते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपने खाना खाया नहीं खाया आपको नींद आ रही है नहीं आ रही है इट इज सो इंस्पायरिंग टू बी अराउंड अ पर्सन लाइक दैट कि यू जस्ट वांट टू कीप अब्सॉर्बिंग तो मैं जाती हूँ सेट पे लाइक अ स्पंज and I just surrender and I felt very lucky that I had somebody that I could be like that with. तो challenge जितने आप challenge मुझे दीजिए I am game for it. I want the challenge and I want to keep doing better. I want to learn. I want to be a curious 5-year-old and I want to be like that. तो अब क्या challenging roles आप करना चाहेंगी हीरा मंडी के बाद? अब मैं बता दूं तो इसमें क्या मजा? नहीं आपका खुद का कुछ मन है? मेरा एक फंडा है कि मैं सपने बहुत देखती हूँ मैं बहुत ड्रीमर हूँ मैं मतलब कभी कभी आप मेरे से बात भी कर रहे हैं ना तो मैं सपने देखने लगूंगी बीच में हाँ तो मैं वो जो बच्चे होते हैं ना क्लास में जो बात नहीं सुनते पीछे बैठते हैं और बाहर खिड़की के बाहर देखते हैं आई एम वन ऑफ दोस ओके सो थैंक यू आई लव यू टू बट जब काम की बात हो ना तब मेरा फोकस पूरा होता है तो मेरा सपनों का फोकस ना पूरा है और जो मेरा फंडा है वो जब तक आपका सपना पूरा ना हो आप उसके बारे में बात ना करें एक बार पूरा हो गया तो खुले दिल से बात कीजिए क्या बात है तो अब मैं तहा आपसे जानना चाहूंगी जब आपको किसी एक रोल के लिए इतना ज्यादा प्यार मिलता है लोग आपको उस कैरेक्टर का समझने लग जाते हैं जैसे कि जो आपने निभाया आपने उसको इतना रियलिस्टिक निभा लिया होता है तब क्या और चैलेंजिंग हो जाता है आगे के प्रोजेक्ट्स में अपने आप को हर कैरेक्टर में ढालने के लिए या फिर हर कैरेक्टर को उस तरीके का सक्सेस मिले या प्यार मिले उसको अचीव करने के लिए? प्यार मिलना तो हमारे हाथ में नहीं है जी मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत है जी I believe that acting is a craft you don't just go into the film and try and wing it you don't wing it there's a science behind it और अगर आपने अपने आप को उस एजुकेशन में डाला है और आपने समझ लिया है कि how does acting actually work then every role should not be I don't know whether you're going to get the same kind of love because there's so many factors for a project to do well the reach it has the kind of let's say in this we had such incredible women who were leading the project right they were all like magnanimous in their own individual right right Aditi Sonakshi Manisha Sanjeeda Richa right Faida ma'am everybody had their own set of fans all across the globe right so you get so much more viewership and therefore when Mr. Bhansali the legend himself directs a project you get even more love and then when you have Netflix you get even more love but every project doesn't have that बिल्कुल but what you have is honesty what you have is making sure that you go on set prepared बिल्कुल you don't use the set as a rehearsal ground understand that all movies are money basically the more money I save the more money the producers will get so for me it's about being prepared इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या बहुत ज्यादा मेहनत करी हमें स्क्रिप्ट नहीं मिली चीज में नहीं मिली हमें स्क्रिप्ट नहीं मिली हमें स्क्रिप्ट जब हम सेट पे जाते हैं उस दिन जी तब मिलती है सुबह सुबह ओके वी हैव अ ब्रीफ ऑफ द स्टोरी कि ये होने वाला है ये होने वाला है ये होने वाला है बट नो डायलॉग्स आर स्विचिंग as you go on set that's why you need to be prepared with the lingo with the dialect you need to be prepared with the storyline with your just preparation as an actor you need to be prepared and when you go there it becomes much easier so yes I think every role that I'm going to hopefully do from now on will have as much gusto and as much honesty that I can possibly bring into the table जी but whether it gets the love or not that's in your hand
आप in your बिल्कुल hand, boys and national girls. crush बन चुके हैं, मैन नेशनल क्रश बन चुके हैं. आप क्या बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स विद दिस. और हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रही नहीं, थी? मैं ये अदिति? कहना चाह रही थी कि हीरा मंडी स्क्रिप्ट के बिना नहीं बन सकती. हाँ. स्क्रिप्ट थी, हाँ. पक्का थी. I never said there was no भी script. थे. I said that we didn't get the script. हाँ, हाँ, वो तो मिलती नहीं डायलॉग्स थी. भी थे, लेकिन दैट्स द मास्टरी ऑफ अ मास्टर कि जब वो सेट पे आते हैं, जो सच्चा लगता है वो करते हैं. तो अगर कुछ डायलॉग झूठा लग रहा है, कुछ बैठ नहीं रहा, कुछ एक जो हार्ट तक तीर, मतलब वो इमोशन की नहीं पहुंचती, then he'll switch it around. So you had to, as he rightly said, you had to be on your toes and ready to change things around. But उसमें मजा है. मजा है. स्क्रिप्ट तो थी. स्क्रिप्ट थी. अच्छा, तो अब तहाँ बहुत सारी बातें हो गई. एक तो डायलॉग ताजदार का आप बता दीजिए. डायलॉग सुनना है कि नहीं? ओजी ताजदार यहाँ पर खुद बैठे हैं. कुछ एंथुसियाज्म ही नहीं लग रहा है मुझे तो ऑडियंस का यहाँ पर. आर यू एक्साइटेड? डायलॉग सुनना है खुद इनके मुंह से. चलिए ताजदार. कुत्सिया, जिस दिन ताजदार बलोच को इश्क होगा, उस दिन पूरा लाहौर इश्क करना हमसे सीखेगा. क्या बात है, क्या बात है. वंडरफुल. आप एकदम से उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं और डेफिनेटली बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था जो लोगों ने पहली बार देखा. इसमें एक बहुत दिलचस्प बात ये थी कि इसके काफी ग्रे शेड्स थे इस कैरेक्टर के, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं लोगों के दिल में उतरे और उनको पसंद भी आए. ऐसा क्या था जो एक ग्रे शेड को भी लोगों ने इतना पसंद किया? Because that's human. Grey shades? जैसे आप I guess a little bit. कई बार ऐसा होता है ना कि पता नहीं ये मेरे लिए है नहीं है. एज अ वुमन, जैसे कि शारमिन जैसे उनके साथ थी, उनको हमेशा लगता था कि पता नहीं आप उनका सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे. रेड फ्लैग, एज अ मैन रेड फ्लैग थे. तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो कैसे आप लोगों के दिलों में फिर भी उतर गए? Because every one of us is here is gray. None of us is white or black. Anybody here white or black? No, I don't think so. So the gray makes us human, right? And if we don't have any gray characters, then we are lying. We are lying to ourselves and we're lying to the other people. That's what people are called fake, right? So I believe that because I had a gray shade, or because Tajdar had a gray shade, that is why people could resonate with the character. People could feel more attached to the character because it felt like, in this situation, what he's doing, is it right or is it wrong? We don't know, but mulk ya mohabbat, it's a very, very important question in Hiramandi, mulk ya mohabbat. And how can you choose? But if you have to think of it reasonably, then you have to give up one बिल्कुल for the world. बिल्कुल. चलिए, बहुत सारे ऑडियंस क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, तो हम कुछ क्वेश्चंस आप दोनों से लेंगे क्योंकि आप यहाँ पर इन लोगों के लिए ही आए हैं और बहुत सारे लोग उत्सुक हैं. देखिए कितने सारे हैंड्स रेज हो रहे हैं. इफ यू हैव द माइक अराउंड, लेट मी पास अराउंड द माइक टू द गाय हु इज इन द लेफ्ट कॉलम विद द पर्पल शर्ट हियर और ब्लैक शर्ट. या We go with that person in the back next. You, yeah. या Yes. या ओके. ब्लैक वुमन. Thank you for choosing me. Thank you. Thank her for choosing you. So you've made a small little awkward mistake. I make a lot of mistakes. There's a gentleman on my right. Get up. I mean, he seems to be the Yeah. part of your team. Hello. Oh, yeah. By Why don't you come and join us? Same color. By default, he's sitting here. We are also wearing the same color by default. By default. Oh, great. हम तीनों का plan था ये. Great. So now coming to my question. When I look at a piece of work on cinema, on the screen, then to me, in order of priority, the script comes first. The sets come later. The costumes come later too. Do you think this has also been followed in the series that you have been a part of? Well, the priority That's a more Mr. Bhansali kind of question, but okay. I hope I'm Long clear. question. I hope Can you keep it shorter? Yeah, done. I'm done. Thank you. I think 100%. Because you can't connect with people
if you don't have a story that flows and touches people's hearts. And for that to happen, of course, there needs to be a written script that is emotionally engaging. So I know that a lot of people are of the opinion that certain films or certain directors, the aesthetics take over. But I do believe that to create everlasting imagery, and you could see like legacy cinema or cinema today, but to create that kind of everlasting imagery, there, whatever it is, cinema is also about aesthetics. So the aesthetics are very, very much there, but at the heart of it, of course, are iconic characters that connect with people, and a script that reaches out to people. And that's the only way that a show like Hiramandi or other films of Sanjay Sir's or other directors actually connect with people. Do you also agree that there has been a little compromise with the script as far as the other things are concerned, which make cinema complete, like the sets, the costumes, etc.? What do you mean by compromise? I don't think Sanjay Sir compromises in any way. Equal importance to all? Prioritize? I think, that's the whole beauty of cinema, and that's the whole challenge of cinema. Okay. Is that script, actors, emotion, aesthetics, lyrics, music, dancing, and especially Indian cinema, sets, costume design, blocking of scenes, everything has to be pitch perfect. And then, after all of that, you have to connect. And that's the whole challenge of cinema. And that's why there are so many variables that have to come together to actually make that connection with the audience. I believe that every single department in cinema is as important. And that's why it's the classic example of teamwork. Amazing. We have one more question right there. Hello, good evening. Hello, Taha, and hello, Aditi Akka, if I may say. Hi. Hi. We share a common thing apart from being cinephiles, Bharatanatyam. I know you're a very passionate Bharatanatyam dancer. You've been and a student of Leela Samson ji. And I myself am a student of Rama Vaidyanathan ji. I know you know her. And you said a beautiful statement. She also says, art is bigger than the artist. I really wanted to know, perhaps as a South Indian, if you may say, but does Bharatanatyam really make it easy for you to get an entry into Bollywood? Not like you want to get an entry through Bharatanatyam, but the art in itself of emoting, of the Navarasas, of the Abhinaya that you do. Say Vajanti Mala ji, Sri Devi ji, Kamal Hassan, Hema Malini ji. They've made a way into Bollywood through dance. So was that, that really helped? And how has Leela Samson ji also inspired you? Because she also herself is a very, very great actress in films. You're right, actually. A lot of really great actors have been also dancers or have learned dancing. But I think that is... I'm going to speak as an Indian, not as a South Indian. Having said that, a lot of South Indians do learn the classical art forms, whether it's music or dance, etc. It's just part of growing up. But I will say this, कि चाहे वो dance हो, चाहे music हो, चाहे वो I don't know, आर्किटेक्चर हो, चाहे वो डूइंग अप लाइक इंटीरियर डिज़ाइन हो, जो आर्टिस्ट्री होती है ना, वो आपके जहन में बसती है. एंड इट कैन मैनिफेस्ट इन एनी वे. अभी मुझ में मैंने माई फैमिली देयर इज नो कनेक्शन विद द फिल्म्स. I didn't grow up watching movies. Leela Akka also became an actor by default. Mani sir asked her, who's going to say no to Mani sir? So it's more like that. And like I watched a film of Mani sir's when I was small, and मैंने कहना ही क्या देखी, and I was so mesmerized. मैंने बोला ये है फिल्म, मुझे तो यही करना है. और मुझे कुछ पता नहीं था कि मणिरत्नम कौन है या रहमान कौन है, मनीषा. I didn't know anything, but I discovered along the way. But it's that thing कि आपका सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है. आप कुछ भी काम करें, आपका कुछ ना कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन होता है और होना भी चाहिए. बिकॉज आई थिंक टू बी अ फुल्ली फॉर्म्ड पर्सन एंड टू बी like comfortable with who you are, you have to connect with yourself. And for me,
It's being in front of the camera. I feel like जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ वो मेरा वंडरलैंड है और मैं बहुत सेफ फील करती हूँ. And I can be anybody. आप मुझे स्टेज पे डाल दें डांस करने के लिए, I'll be like भागो यहाँ से. Though I've been doing it since I was 5 years old. So your self-expression comes in different ways. Now how it's helped me, I don't know. Because वो मेरे जहन में है. I don't know a life without music and dance. So how it's helped me, पता नहीं. Maybe discipline, maybe just this thing ki, like my teacher used to tell me when I was small ki, you practice till you bleed. But जब आप audience के सामने आए, आप उनको अपनी cleverness ना दिखाएं, आप उनको अपनी technique ना दिखाएं. Just connect with the heart. Maybe, I don't know what it is. मुझे नहीं पता. क्या बात है, क्या बात है. Okay, we have one question right at the back from a girl. Yes. Hello. Hello. Am I audible? Yes. Yes, you are. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Yeah. Are you going to Hi. get her nervous? Am I? Don't say- Sorry. Because in your, in that voice, any girl would be like forgetting what she has to ask you. Ta. Ma'am, my question is basically to you. So you played a supporting role in Padmavat, and when you were doing Hira Mandi, so you played a role which actually had a central nexus in the series. So my question to you is, when you are playing a supporting role in a Sanjay Leela Bhansali movie, and then again playing a part of a central character in the Sanjay Leela Bhansali series, or the creation of Sanjay Leela Bhansali, what is the major difference that you found in his direction, or the kind of pressure that you faced? You know what? Okay. These titles na, are something that other people give. As actors and as artists, हम कुछ भेदभाव नहीं करते. तो जैसे वो like let's call it a guest appearance. That was supposed to be a guest appearance or a cameo. But मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था. क्यों? क्योंकि मैं संजय लीला बंसाली के साथ काम कर रही हूँ. वो मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं. तो या whether the role is 25 minutes or it's 6 hours, your connection with the audience can happen in a second. And ultimately, as an artist, I want to make you feel what I'm going through. So it'll happen in 1 second. क्या और वो सच्चे दिल से ही होता है. वो कैमियो या फुल फ्लेजेड हीरोइन का किरदार उससे नहीं होता है. और आप वेस्ट में देखिए, वेस्ट में आप एक जेनिफर लॉरेंस 5 मिनट का रोल करेंगी या पूरी पिक्चर करेंगी. And I feel as artists, that's how we should be. It's about connecting to you. It's about loving you, and hopefully आप हमें प्यार देंगे. वो 1 सेकंड में हो जाता है. Bilkul. Okay, one more question we'll take from that girl. Yes. Hi Taha, hi Aditi. Hello. I am a huge fan of the both of you, and Thank I you. think you're just stunning. And so I really don't have a question. I just really wanted to appreciate you as human beings and as actors, because I really loved Taha's role in Hira Mandi. Kya And baat hai. Aditi, I really love you. One of my acquaintances, he's a huge fan of you. So I really wanted to, just ask you to say hi to him. If I could just capture a video, he would be baat really happy, because he's preparing. What's his name? So his name is Anant, and he's Anant. preparing for banking exams right now. What exam? Banking Banking exams right exam. now. Yeah. So can you just, say that message out loud? Absolutely. Put on your camera. Yeah, the camera is on. Hi Anant, this is Aditi, and I'm sending you lots of love and luck for your banking exam. How sweet. And just a small request, if I One may. more. Just a small request. This is from my side. Can I just dance with you, because you're an amazing dancer, and I have learned Kathak in the past, so I would love. By the way, I have not learned Kathak, okay? Yeah, I know you've done Bharatnatyam, but It was classical the dance. toughest thing to do. To do a classical dance form that you have not learned. Definitely. No, but honestly, that's the maza of it. So, even as a kid, and if are there dancers over here? You That's have all? that dance. Oh my God. Okay. So, आप सबको याद होगा कि अगर आपकी टीचर कोरियोग्राफ कर रही हैं, तो you come like an empty slate and you stand. And then वो आपको बताए ये hand raise करो, अभी ये करो, अभी वो करो. Sometimes you end up like this. And you're like, now how do I get myself out of this knot? So, ऐसे होता है in choreography. और जो मज़ा है, normally जब हम फिल्म पे फिल्म की
का dancing करते हैं, तो everything is pre-choreographed, you know, and little tweaks are made. But the maza with Sanjay sir's Sanjay sir's shooting is that he has a brilliant choreographer, Kruti Mahesh. But जब हम set पे आते हैं, तो what works and जो संजय सर के जहन में आता है as magic, आपको वो कराते हैं. And this walk happened like this. He heard this music, उस पे बहुत कुछ तत्कार ये वो कुछ उन्होंने prepare किया था. And he said, मुझे I don't want anything. I just wanted, and he had made me put on weight for Hira Mandi. So he said, I just want her back and I want her to walk. That's how it happened. So there was no preparation. It happened on set. क्या बात है. We have one more question right there from the audiences. Okay, that woman, yes. Hello, Diti. How are you? I'm very well, thank you. Yeah, I'm Dipali Zain, and I'm also the promotion of Indian culture and science supporters. So you are so looking very beautiful in Indian culture attire, like you. Thank you. So I'm मेरा आपसे एक निवेदन है. मेरी ऑर्गेनाइजेशन है अनुराग्यम, जो इंडियन कल्चर को सपोर्ट करता है, साइंस को. और अभी हमने एक लिट्रो फैशन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया इन यूपी मेरठ. तो प्लीज आप मेरे उसके लिए अनुराग्यम के लिए थोड़ा सा अपने गुड वाइब्स ये हम बाद में करें. क्या बात. नहीं प्लीज फॉर वन प्लीज. Thank हम you so किसी much. और काम Thank you के so लिए आए much. हैं, है ना? Thank you. थैंक यू सो मच. Thank you so much. You want to say something, Taha? Okay. We have two of your fans right there who have some beautiful posters. Yes. Okay. Yeah, why Can not? you show them up? Can you show them up? क्या है इसमें बताएंगे? One's Aditi and one's me. Azan, first of all, I love you so much. Oh, wow. Thank you. Ma'am, I adore you so much. Thank you. Swarna to give you this frame. Please accept this. ले आइए. Sure. Okay. Thank you so much. All right. Very quickly. All right. And then we will move on. And we'll see how these paintings are. Beautiful. Thank you. Thank you. How sweet. Ayush, thanks for this. It's beautiful. I love it. Thank you. I made this. Oh, wow. Actually, we made this. Aparajita made it. Yes, I'll give it to both of you. Thank you, Baba. I'm sorry. Come on. Let's Thank you. 1, 2, 3. quickly. Thank you so much. Thank you. You made this? Kind of rude, bro. Arey, thank you. क्या? Okay, thank you so much. Okay, and it's now time. We'll take your questions in a little while. It's now time for the rapid fire round with both Aditi and Taha. You guys ready for it? They're going to be really revealing some fun facts in this rapid I'm fire. never Are ready we? for a rapid fire. Don't Just know. letting you all know. Why? She always wins, man. She always wins. She always wins. She's There's fast. no hamper in this one. We're just going to be like Damn doing it, then some I'm not like nice playing. ones. And we're going to be finding out some interesting things about you. Should we start off with you then, Aditi, since you don't like it? But I don't want to tell now. Okay. chalo. ठीक है, cool. All right. Which is your all-time favorite movie? One? No, it's not possible. One. Pick one. All Mani Sir's films. All Manisha's films. Okay. One thing that you cannot live without. Love. How sweet. What is your go-to comfort food? Idli. Ghee. Malga Indian pudi. ghee. क्या बात है? Okay, if you could switch lives with anyone else in this world, who would you do that? Not a chance. I want to be myself. क्या बात है? Okay, a book that changed your life. A book that changed my life. Okay, there's that. Okay, I don't know if it changed my life, but there's a very sweet book called. What is it called? The Incident of the Dog in the Nighttime Okay. by Mark Haddon. I know the author's name. It's a really sweet book, and it's told through the eyes of a child. I love that book. It's very sweet.
Okay. And what is the best advice that you've ever received from anyone? To accept yourself for who you are and to be authentic and to always flow with love and kindness. क्या बात है? One skill that you could really master instantly. All of the above. Whatever is thrown at me, I would do it. Okay. The last show I that can't do maths, but please. can't do maths. No maths for me, no. math phobia. Okay. The last show that you binge watched on an OTT platform. Not a show, but I watched this amazing film called Past Lives. It's a love story and it's really, really beautiful. Y'all should watch it. So good. Who is the biggest inspiration in your life or in Bollywood? My nanny and my mother first, and then Audrey Hepburn. If you want an actress, what would you be? Always an actress, always a drama queen, always, always. Not trading. Okay. Let's also ask you if there is any director that you would now want to work with, since you've already worked with two of your favorite ones, Manisa and Sanjay Leela Bhansali. मैं क्यों बताऊं? मैंने बोला ना ये सीक्रेट है, जब होगा तो मैं आपको बता दूंगी. खुशी खुशी. Any co-actor that you really want to have? मैं क्यों बताऊं? Same. Okay. Tell me, films or OTT, what do you now like more? No, it doesn't work like that. It's good stories by good directors with good actors. और content चाहे जहाँ भी आपको दिखाया जाए, it's about connecting, right? And it's about feeling what it is that story is telling you. A story takes you into its world, and you can do that on any platform. Okay. तो ये बताइए, अपने रोल के किरदार के अलावा हीरा मंडी में आपको किसका किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि मेरे हिसाब से I really love Bibbo Jan. She is so pure, but she's so strong, and she's a hero. And I'm so grateful that Bibbo Jan came to me, and that Bibbo Jan was written for me, and that I could play her. And for the love that Bibbo Jan got, thank you so जोरदार much. तालियां हो जाए. जोरदार Thank you. तालियां. Definitely इस बिब्बो जान को हमारा बहुत सारा ढेर सारा प्यार, क्योंकि हमने आपको इस रोल में पूरी तरीके से अपने कैरेक्टर में आते हुए देखा और पूरी तरीके से अपनी जो बेस्ट देते हैं स्क्रीन पर वो देता हुआ देखा. तो थैंक यू सो मच, एंड यू Thank वेस्ट ऑल you. द क्वेश्चंस, सो दिस वाज नॉट डिफिकल्ट. आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी इजी. Okay, Taha, you ready now with my your best. rest of the questions? Okay, I will rapid try. fire questions for you, Taha. The most memorable moment from your career so far? When Mr. Bhansali actually got me from a 3-day role to the lead of the project. Okay. If you could collaborate with an actor or a filmmaker, who would that be? I haven't worked with Mani Ratnam. Let's go with that. Okay. Who inspires you the most in life? My mother. How sweet. And in Bollywood, I'm a big fan of Shah Rukh Khan. That's right. Big fan of Shah Rukh Khan. आप मिले उनसे, आपने कहा उनके साथ काम करना है? मैं उनकी आंखों में इतना खो गया, मैं उनको बोल ही नहीं पाया कुछ. उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देखी? Yes. What did he say? He kissed me. Oh, how Kiss me. sweet. How sweet is that? Okay. What's something that you think everyone should definitely try once in their lives? They should definitely try skydiving. Skydiving. Adventure. Okay. क्या ऐसी चीज है जो आपने अभी अपने बारे में लर्न किया है या डिस्कवर किया है? That I'm actually much calmer in the face of stress and tension than I used to be. Okay. अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो वो कौन सी होती? Have you seen this old Batman? उस Batman film में there was a guy, he made a machine and it just got all the knowledge and information so that he could just limitless. He could use his mind limitless. So that would be my power. Okay. अब आपके करियर में नेक्स्ट हम आपको क्या करते हुए देखेंगे? ताजदार के बाद क्या? Romance. Romance. Let's do romance. Superb. What is the most used app on your phone? WhatsApp. Okay. What is the one character now that you would love to play in future? Do you have that character, maybe Hollywood inspired or in Bollywood, that you would want to play? Too many characters. Have you seen this film called Sam?
he's actually a grown-up boy, a grown-up man, but his mind is like a boy. Okay. You know, I would like to do that. I would like to play somebody who's blind, like Sparsh. Yeah, बहुत सारी फिल्में हैं ऐसे. But yeah, just different. Okay. कोई एक ऐसा Somebody character- said Shaktiman. शक्तिमान, मैं बनूं शक्तिमान, मैं बन जाऊंगा शक्तिमान. You are searching. You are searching. They are searching. हमारे रणवीर भाई को मिल चुका है वो. ओके आपके लिए हीरा मंडी में अपने किरदार के अलावा ऐसा कौन सा किरदार था जो आपको बहुत पसंद आया? Bibbo Jan. 100%. How did she take these words out of my mouth? आप उनके साथ बैठे हुए ये नहीं कर सकते कि उनका नाम ना ले. No. Hello, excuse me. I love Bibbo Jan, but the thing is, But he's saying but but my favorite has to be my grandma Farida Jalal ma'am. क्या बात है, क्या बात है. How sweet. She's just too cute, man. उनके She's too साथ cute. का एक डायलॉग बोलेंगे? अभी तो कहा मैंने एक डायलॉग. But I'll tell you a story of her. जी जरूर. जब भी हम लोग सेट जाते थे और फरीदा मैम बैठी हुई थी, जी. तो हम लोग जाके पूछते थे मैम हाउ आर यू, तो फिर वो बोलते हैं आई एम जस्ट लाइक अ लड्डू 1/2. So she's adorable. I love her. क्या बात है, क्या बात है. जोरदार तालियां हो जाए. रैपिड फायर राउंड्स को यही समेटेंगे, लेकिन बहुत सारी और भी बातें करेंगे. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब अगर एक्टर के अलावा आपको अपने करियर में कुछ और करना हो तो क्या आपने वो भी सोचा है? मे बी डायरेक्टिंग, राइटिंग, ताहा, एनीथिंग ऑन दैट फ्रंट? Anything to do with filmmaking is something down my alley. मुझे producing का भी शौक है. इंशाल्लाह एक दिन मैं direction भी करूँगा. But of course, my heart and soul lies in acting, like she had mentioned. There's a self-expression, and for जी. me, that is acting. जी. And that's why that's always going to be first priority. But of course, film industry में जो भी काम मिले मैं कर लूँगा. मैं spot boy भी बन जाऊँगा. No tension. ओके वैसे इन सब बातों में हम भूल ही गए. अदिति, आपको कंग्रेचुलेट करना है. आपकी हाल ही में शादी हुई है. बहुत बहुत बधाई है आपको. मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू, न्यू नवेली. Thank you. Too bad to all the boys out there. And we were mesmerized with your breathtaking pictures, of your wedding. इतना ब्यूटीफुल, सीरीन, प्योर लग रहा था आपकी फोटोग्राफ्स में. जहां ऐसे टाइम पे जब हम बिग फैट ग्रैंड इंडियन वेडिंग्स देखने के लिए यूज्ड टू हो गए हैं, आपने चुना कि आप बहुत ही क्वाइट, एक सीरीन, प्योर जगह पर जाके शादी करेंगी. ये आपका थॉट कैसे आया कि वांट टू डू अ वेरी क्वाइट प्राइवेट वेडिंग? वो मैंने इतना कुछ प्लानिंग नहीं किया. मतलब दिस इज समथिंग आई वांटेड टू डू. ये जो टेम्पल है, it's been in our family for 400 years. It was built by my great 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 grandfather, and in fact completed by my great 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 grandmother. Do the calculation. I told you I'm not good at math. So it's very special to my family, and I was very close to both my nana and nani. So somewhere by being there, I felt like I was with them. And their blessings are very important to me. So it was just the family and cousins and obviously Sid and I, the most important people. But हमने ऐसा कुछ इतना plan नहीं किया. But now the way that people are speaking it, Yeah. it seems like it was so thought out. But it was just something दिल से जो हमें करना था, हमने वही किया. And we were just like two kids in love and doing what we really wanted to do around people who truly, truly blessed us from their hearts. और ये लव हम सबको उन पिक्चर्स के जरिए दिख रहा था. आई एम श्योर जितने भी सिंगल लोग हैं उन लोगों को ऐसे देखने को बन कर रहा था कि अब हमारी भी शादी हो जाए. नहीं ताहा? No, but I have to say one thing. जब शो रिलीज हुई, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको आगे से आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं. Especially other actors, because other actors think of you as competition or whatever, right? But Siddharth messaged me literally like on the second day. It was May 2nd, and Siddharth's message had come down to me. So I have to say he's a great, great man, and she's very lucky to have him. And he's also lucky. What do you mean? Of course he's lucky. I'm saying she's lucky to have such a great man.
नहीं, great पर guy. मेरा इशारा कुछ और था जब मैंने ये बात कही कि सभी सिंगल लोगों को मन कर रहा था कि वो शादी करना चाहें उनकी फोटो से इंस्पिरेशन लेकर. मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका मन किया? Well, like I said, I think when I saw those pictures, we all know, and I know them personally, right? And how close they are, what a fabulous relationship they share. And not too many couples nowadays share such a honest, loyal relationship. So let's knock wood for that. And so yes, everybody should be jealous because this is 1 in a billion. अब आप सब वहाँ से नजर उतारिए प्लीज. नहीं, touch wood, and everything stays good. But what about your love life? When are we hearing you? Any wedding bells on the cards? See, I knew this was a trick question. Yeah, right? Taha, Yeah, just right. put your Two mic times down. Seems like it. Seems like it. Twice I said. I think abhi मेरी life शुरू हुई है. You know, I have a lot of things to kind of give back to my mom. You know, and I'm not talking about financial things. I'm talking about the amount of dedication she has put in behind me, the amount of sacrifices that my mother for 14 years. जब आपका लड़का कुछ बन ही नहीं रहा है, हासिल कर रहा है, हर जगह जा रहा है, पैसे उड़ा रहा है, मतलब क्लासेस में इधर-उधर, but कुछ हो नहीं रहा है, right? Everybody's going to give up, but my mother did not. Yes. For 14 years. Continue It's to a believe. long time. So I have a big thing to put her name in the sky. बहुत काबिले तारीफ है आपका इस तरीके से कहना, और उम्मीद करते हैं आगे आपके लिए और चांद लगते ही चले जाए आपके करियर में. और आखिर का 1 मिनट बचा है. ऐसा हो नहीं सकता कि बिब्बो जान सेट पर हो और वो अपनी सुरीली आवाज में हमें कुछ सुनाए ना, because we do know Aditi that you are a very honestly, fantastic नहीं मैं singer. गा देती. Really, मुझे बहुत टाइम ऐसे गन रख के बोलते गाओ गाओ गाओ. पर आप Choice बहुत नहीं होती. अच्छा एक गाती सेकंड, लेकिन हैं. सच में if you hear my, I really have a sore throat. I've just come back from London. I'm hectically jet lagged and I have fever and a sore throat and a cold. I don't think you want me to sing. 2 line for हमारी आप जब when she's sick ना, I'm going to tell her आप थोड़ा सा ना 100 मीटर रेस कर लीजिए प्लीज, बस दिखा दीजिए प्लीज. वो तो हम लोगों का काम है. No, हम लोग how can I हमेशा sing ऐसे when I have a करते sore हैं. throat? Be nice. I seriously have a sore जी, throat. okay, आप one सुन there's सकते one हैं मेरी person who भोंपू wants जैसी to say आवाज है. something, I think, right there. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर. Good evening. मैम मैं का फ़ैन हूँ. आपने जब रॉकस्टार में काम किया था Thank you. इम्तियाज़ सर के साथ, तो उनकी डायरेक्शन और संजय सर की डायरेक्शन में आपको क्या मतलब डिफरेंस मैम लगा मैम? मैं एक बात बताऊं, एज एन एक्टर ना सब हमें कंपेयर करते हैं, बट मैं हमेशा मानती हूँ कि आर्टिस्ट को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए. ईच आर्टिस्ट एंड ईच ह्यूमन बीइंग एक्चुअली हैज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट देम, और दैट इज़ व्हाट मेक्स देम स्पेशल, दैट इज़ व्हाट मेक्स देम, दैट इज़ व्हाट मेक्स अस लव देम, राइट? तो मैं मानती हूँ कि कभी उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए. Both are incredible, and I hope I get to work with both of them again and again and again. एंड Thank you. आप जैसे मैम भरतनाट्यम आप डांसर हैं, और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, आई एम ऑल्सो अ म्यूजिशियन. जी. आई प्ले ड्रम्स एंड तबला. Wow, that's lovely. थैंक यू. Wonderful. So Thank cool. you All so the best much. to you. Time is up. We could have gone on Thank and you. on to talk a lot about you with all our audiences, but time is up. Thank you so much, Aditi and Taha, for this wonderful conversation. I wish you both all the very best for wonderful work that is going to be coming in, and we are going to be waiting for all of that. Thank you so much. Thank you so much.